Hello children, welcome in KVS online classes. Today we start our second lecture, that is part 2 on matrix. Our topic is types of matrix. There are various types of matrix, but some matrices are in our course we will study first, in which first matrix is column matrix. A matrix is said to be column matrix if it has only one column. बच्चों, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो, ऐसी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है. That means there is condition only on column, not on row. In general, A equals to Aij m into 1 is a column matrix of order m into 1. Here is another example of column matrix of order 3 into 1. Now our second matrix is row matrix. Similarly, a matrix is said to be a row matrix if it has only one row. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो मैट्रिक्स कहलाती है, जिसमें एक ही रो हो, कॉलम कितने ही हो. Here's an example of 1 into 3 order. 1 minus 3 and 4 is the elements of row matrix in which there is only one row but column are 3. In general, B equals to Bij 1 into n is a row matrix of order 1 into n. Our third matrix is a square matrix. नाम से ही जैसे लगता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज और कॉलम के नंबर बराबर हों. A matrix in which the number of rows and are equal to number of columns is said to be square matrix. There is example in your screen is a square matrix of order 3 into 3. इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं. In general, A equals to Aij n into n is a square matrix of order n into n. Our fourth matrix is diagonal matrix. Diagonal matrix, a square matrix. First of all, matrix should be square. A square matrix A equals to Aij n into n is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी यदि उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो. जैसे A12, A13, A21, A23, A31, 32, ये सब एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो. is a diagonal matrix of order. Here example of diagonal matrix of order 3 into 3. In general or mathematically, we say that diagonal matrix of order n into n if Aij equals to 0 when I not equals to j. इसका मतलब जहां I और j नहीं बराबर नहीं है, जैसे 1 2 2 1 1 3 3 1 3 2, ऐसी पोजीशन के ऊपर Aij की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. There is some remarks or notes regarding diagonal matrix. The diagonal elements Aij for which I equals to j are called diagonal elements of A. यदि I और j बराबर हो, जैसे A11, 22, A22, A33, A44, इनको डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ I और j 11 है, 22 है, 33 बराबर है. Point number 2, we write diagonal matrix as A equals to diagonal 2, 4, 5 in our given example, or in general A equals to diagonal in bracket A11 element, A22
कोमा A33 डैश ANN। अगर हम इन एलिमेंट्स को ब्रैकेट में रखेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स से। व्हाट इज प्रिंसिपल डायगोनल? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम अपर लेफ्ट कॉर्नर टू दैट लोअर राइट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called principal diagonal or the leading diagonal of a matrix. In our example, upper left corner, that is 2 2, and lower right corner, that is 5 5. It is 5. So 1 1 2 2 3 3. These are the elements of principal diagonal or leading diagonal of a matrix. Or we draw a line which coincide with element 2 4 5 is known as principal diagonal or leading diagonal of a matrix. Next point is, next remark, trace of square matrix. What is trace of a square matrix? The sum of all elements of principal diagonal or the leading diagonal of a square matrix is called trace of A, and it is denoted by trace A, that is trace A equals to A11 plus A22 plus A33 plus dash plus ANN. ट्रेस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? हम लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को हम ऐड कर लें, वो ट्रेस ए होता है. इन आर केस ट्रेस ऑफ ए इज 2 plus 4 plus 5, that is 11. Next matrix is scalar matrix. Scalar matrix डायगोनल मैट्रिक्स का एक रूप है, एक फॉर्म है. फॉर scalar matrix should be diagonal. A diagonal matrix is said to be scalar matrix if its diagonal elements are same. That is, square matrix A equals to Aij n into n is said to be a scalar matrix if all its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are some constant k, that is Aij equals to 0 if I not equals to j, non-diagonal elements, Aij equals to k if I equals to j, these are diagonal elements. In our example, diagonal elements are 2 2 2. So it is a scalar matrix of order 3 into 3. Identity matrix is a special kind of scalar matrix only. In a scalar matrix, if we replace all diagonal elements by 1, then we get identity matrix. यदि हम scalar matrix में diagonal elements को replace कर दें 1 1 1 से, तो हमारे को identity matrix मिलती है. Now we see the definition. A diagonal matrix is said to be an identity matrix if all its diagonal elements are 1 and rest are, that is, non-diagonal elements are 0. That is, Aij equals to 0 if I not equals to j, non-diagonal elements. Aij equals to 1 if I equals to j, that is, diagonal elements. We denote identity matrix by I. In our case, there is example of identity matrix of order 3 into 3. So we say this matrix, we represent this matrix by I3. If order of matrix is n, then we say that identity matrix is of order n into n. Order n into n or in. Now next matrix is null matrix or zero matrix. A matrix is said to be null or zero matrix if all its elements are 0. Whether matrix is square or rectangle, all elements should be 0 in matrix. A null matrix or zero matrix is represented by O. Now our next topic is equality of two matrices. कब दो मैट्रिक्स बराबर होंगे?
two matrix A equals to Aij and B equals to Bij are said to be equal if they are, number one, if they are of the same order. दो मैट्रिक्स बराबर होंगी यदि उनका ऑर्डर सेम हो. दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम कंपेयर नहीं कर सकते. अगर दोनों सेम ऑर्डर की हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर. सेकंड कंडीशन, ईच एलिमेंट ऑफ ए is equals to the corresponding element of B, that is Aij equals to Bij for all I and j. इसका मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स का 1 1 एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के 1 1 एलिमेंट के बराबर होगा. फर्स्ट का 1 2 एलिमेंट सेकंड के 1 2 एलिमेंट के बराबर होगा. थर्ड मैट्रिक्स फर्स्ट का थर्ड एलिमेंट 1 2 सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट 1 2 के बराबर होगा. इस तरह से हम सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए. इन आर केस गिवन एग्जांपल इज 1 2 3 4 इक्वल्स टू 1 2 3 4, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट 1 1 इक्वल्स टू 1 1, सेकंड एलिमेंट 1 2 इक्वल्स 1 2 इज 2 इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 2 एलिमेंट 2 of the second matrix. Similarly, all elements are corresponding elements are equal. But in next example, 2 is not equals to 1. First element 1 1 is 2. In second matrix it is 1. So they are not equal matrix. Equal matrix can be represented by A equals to B. Symbolically we write A equals to B. So guys, this is the end of our second lecture. I hope that you will understand the things. If you have any doubt, please call me or ask me. Thank you.